Inhalation is active process. Exhalation is passive process. It is a passive process. Now, muscles of breathing. So दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. Muscles of inhalation and the muscles of exhalation. Exhalation. Right. Inhalation, external intercostals. Intercostals. And exhalation, internal intercostals. Right. Plus diaphragm, abdominal muscles, there are certain additional muscles as well. कुछ और भी muscles होती हैं जो forced breathing के टाइम काम आती है. देखिए एक मसल है स्केलीन. स्केलीन मसल. From hyoid bone this occurs between the hyoid bone and sternum. Sternum. Then there is sternocleidomastoid muscle. Neck to sternum. Neck to the sternum. Then there is trapezius. Trapezius. ये पीछे की तरफ होती है शोल्डर रीजन में. This is the shoulder region. Right. Mainly muscles. Main muscles ये होती हैं. Intercostals. Diaphragm and abdominal muscles. Now, inhalation. This thoracic cavity is a complete closed chamber. The only opening it has towards the outside is the opening of the trachea, which communicates with the pharynx. Otherwise, it's all packed. The trachea branches into the lungs. The lungs are also closed. यहाँ पे lungs बंद. ये हो गया बंद. नीचे की तरफ यहाँ पे डायफ्राम है. It's a muscular partition between the thorax and the abdomen. This is the thoracic cavity, or simply the thorax, and this is the abdomen. And then there are the two pleural membranes. Lungs के ऊपर membranes.
what happens during inhalation? The diaphragm goes down. The diaphragm goes down. And there is a law given by a scientist Boyle. Boyle's law. Now this law states that temperature remaining constant, the pressure is inversely proportional to the volume. So as the volume increases, the pressure would fall. The diaphragm goes down, the volume of the thoracic cavity begins to increase. Now this increased volume, it pulls the pleural membranes, pulls the pleural membranes. ये pleural membranes को बाहर को खींचेगा. Right. The inner pleural membrane is attached to the lungs. So when this outer membrane is pulled, the inner membrane is also pulled because of very small amount of water, the fluid between these. This fluid does not let the two membranes to separate. Outer membrane is pulled, the inner membrane is pulled. Between these membranes, the pleural membranes, as we just discussed, the pressure is always negative. Intrapleural pressure is always negative. Right? The pressure decreases in the thoracic cavity. This decreased pressure pulls the outer pleural membrane. The outer pleural membrane pulls the inner pleural membrane, and the lungs begin to inflate. They begin to be stretched. As they are stretched, the negative pressure is communicated into the lungs. The intrapulmonary pressure, the pressure within the lungs, also decreases. This lets the air inside. इसकी वजह से air अंदर को आ जाती है. Bringing about inhalation. Next page. अब ये जैसे this is, let us suppose, the lung. Let this be the diaphragm. And it is closed. The diaphragm separates the thoracic cavity and the abdominal cavity. It is separating. Let this be the pleural membrane. The intrapleural pressure is very, very important. There's one thing which is happening. Step by step पढ़ते हैं. There is decreased pressure in the thoracic cavity. First case में क्या हुआ? Thoracic cavity का pressure decrease हो गया. Now this pressure is communicated to the intrapleural pressure. This is already negative. This is already negative. Further decreases. It would decrease. The intrapleural pressure. But not much difference finally is finally seen in this pressure, simply because the inner membrane, which is towards the lungs, it is also pulled towards the outer membrane. बाहर की membrane को खींचने की कोशिश की जाती है, अंदर वाली membrane भी उस तरफ pull हो जाती है because of the fluid. Otherwise क्या होता है, बाहर वाली membrane खींचती है और बाहर वाली membrane फट जाती है.
क्योंकि बीच में फ्लूइड है, तो फ्लूइड होने की वजह से क्या होता है कि अंदर वाली मेम्ब्रेन भी इसके साथ 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 बाहर को खींचती है। उनके खींचने की वजह से ये लंग्स बाहर को स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। लंग्स इलास्टिक है, द रिजल्ट इज द लंग्स बिगिन टू एक्सपैंड, राइट? एंड एज द लंग्स बिगिन टू expand, the alveoli, the wall of the alveoli are also pulled outwards. The negative pressure is communicated to the alveoli. Now this happens for a very small amount of time. This decrease for normalizes. So not much difference is there in the intrapleural pressure. चाहे इनहेलेशन हो चाहे एक्सहेलेशन हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस प्रेशर की वजह से ये जो एक कुछ बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो प्रेशर में एकदम से चेंज आया होता है, इसकी वजह से अंदर वाली मेम्ब्रेन खिंच जाती है, लंग्स खिंचने शुरू हो जाते हैं, एल्वेलाई खिंचने शुरू हो जाते हैं, एंड द एयर इज ड्रॉन इनटू द एल्वेलाई, अंदर को खिंच जाएगी। जैसे जैसे एयर अंदर आती जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लंग्स के बीच का जो प्रेशर है, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर जो प्रेशर है, वो धीरे धीरे इक्वेट होना शुरू हो जाएगा। ये जो नेगेटिव प्रेशर का जो इफेक्ट था, वो धीरे 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 रिवर्ट बैक होना शुरू हो जाएगा। दिस इज इनहेलेशन, दिस इज इनहेलेशन, राइट? नाउ इन दिस केस, the role of intercostals, the role of external intercostal muscles or intercostals. The external intercostals, they expand because the expansion of the chest. This is by a specific movement in the ribs. अगर रिब्स को हम साइड से देखें, तो ये जैसे एक रिब है, ये दूसरी रिब, ये रिब पीछे को इधर को जा रही है, ये दूसरी रिब इस तरह से गोल घूम के पीछे को जा रही है। This is how the cage is being formed. Now the external intercostal muscles, what these do is, after the contraction, the ribs are seen to have moved something like this. The ribs move outwards and upwards. Outwards and upwards. Slightly overlapping each other. Now this is the thoracic cavity. Let us suppose इसको अगर हम ऐसे बना दें, this is the thoracic cavity. The thoracic cavity begins to expand like this. नीचे से एक्सपेंशन ज्यादा होता है, ऊपर से एक्सपेंशन बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। इस जगह यहाँ पे एक्सपेंशन इतना नहीं होता है, एक्सपेंशन यहाँ ज्यादा होता है नीचे की तरफ, और स्टर्नम ऊपर की तरफ खींचनी शुरू हो जाती है। It's pulled upwards. Right? At this instance, the diaphragm begins to, from its dome-shaped position, let this be the diaphragm. The diaphragm begins to go down. अब diaphragm नीचे जाना शुरू हो जाता है, ये नीचे जाना शुरू हो जाता है। The maximum displacement of the diaphragm, which is possible, is 7 centimeters. It is 7 centimeters. Right? Each centimeter, 1 centimeter displacement
is equivalent to 200 to 300 ml air. ये जैसे जैसे नीचे जाएगा हर सेंटीमीटर के डिस्प्लेसमेंट से लगभग इतनी एयर अंदर आनी शुरू हो जाएगी. Now this air begins to enter the lungs. Right? The negative pressure in the thoracic cavity and the negative pressure between the pleural membranes are very essential for the air to come inside. जैसे जैसे एयर अंदर आएगी लंग्स का जो इलास्टिक रिकॉइल है वो भी इफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा. आप इसको खींच रहे हो, आप जितना इसको खींचोगे लंग्स की वॉल में टेंशन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी. सेम चीज एल्वेलाई में होगी. डायफ्राम जितना नीचे गया है, जितना नीचे को गया है उसी हिसाब से इसमें नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ, उसी हिसाब से इसमें इलास्टिक रिकॉइल डेवलप होगा. एक टाइम पे आके ये सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे और एयर अब और अंदर नहीं आ पाएगी. The inhalation stops. You can voluntarily for some time stop in exhalation. आप सांस रोक सकते हो, बट ये चीज बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहती. And immediately diaphragm tries to move to its original position. And same with these muscles. ये मसल्स ने कंट्रैक्ट करके अपनी एक्टिविटी करनी शुरू की है, ये मसल्स रिलैक्स होनी शुरू होती हैं, डायफ्राम रिलैक्स होना शुरू होता है. And as the diaphragm would start relaxing, it would begin to rise again up. The diaphragm is at rest, dome shaped. Diaphragm at rest is dome shaped. As it begins to rise up, the elastic recoil of the lungs, the elastic recoil of the alveoli, all of these become effective. And the air gradually begins to move out of the lungs. ये तब तक बाहर को निकलती रहेगी जब तक अंदर और बाहर प्रेशर बराबर बराबर नहीं हो जाता. But this intrapleural pressure, it never becomes zero or positive. It is never zero or positive. ये कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा नहीं होता, ये हमेशा कम रहता है. थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में टेंशन हमेशा रहती है, एक पुल हमेशा जनरेटेड रहता है. जब ये डायफ्राम ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जब ये ऊपर ऊपर जाएगा, तो ये हो सकता है कि डायफ्राम जरूरत से ज्यादा ऊपर हो जाए. यहाँ एब्डोमेन का प्रेशर इफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा. The abdominal pressure is responsible for the final position of the diaphragm. Abdominal pressure अब नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा. As the abdominal pressure becomes negative because of the movement of the diaphragm up, अगर डायफ्राम ऊपर होगा तो एब्डोमेन में क्या होगा, अब एब्डोमेन का वॉल्यूम बढ़ेगा. अगर एब्डोमेन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा. डायफ्राम वहीं तक ऊपर को जाएगा, उस पोजीशन तक ही ऊपर तक राइज करेगा जहां तक दोनों प्रेशर्स बराबर बराबर नहीं हो जाते. This is mechanism of breathing. Role of external intercostal muscles to displace the ribs in such a way that they slightly overlap each other and they increase the diameter of this thoracic cage, this thoracic cavity. The movement is outward
and upwards. The movement is outward and upward. Right? To the next slide. Next page, open that. Role of internal intercostal muscles. Role of internal intercostals. These are antagonistic to external intercostals. The kind of movement seen in ribs would be hence opposite. So it's downwards and inwards. The ribs which had been displaced in this position, right, they begin to come to their original position. And as you can see, the sternum would also would descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The ribs come back to their original position. The intercostals, as we just discussed, the intercostals are the muscles of forceful breathing. They are the muscles of forceful breathing. रेस्ट पे काम नहीं आती है. Right? At rest, the abdominal muscles at rest. The abdominal muscles and diaphragm are active. फोर्सफुल में सारी मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगी. ये तो होंगी पहले से. इंटरकोस्टल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगी. At rest, the air inhaled is called tidal volume. Tidal volume, which is equal to 500 ml. Which is equal to 500 ml. 500 ml के बराबर. Forced inspiration. Forced inspiration. Additional 2.5 liters, 2500 ml air is inhaled. This additional 2500 ml air which is inhaled is known as the IRV, inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume. अगर हम दोनों को ऐड कर दें
तो ये टोटल, ये एक तरह की इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। एक तरह से क्या बन जाएगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टीवी प्लस IRB becomes IC, that is the inspiratory capacity, 3 liters. Right? आज यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ो अच्छे से, दोबारा ध्यान से सुनो, देखो। ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आई पूछना जरूर, पूछ लो। चलिए क्लास ओवर करते हैं, बंद करते हैं इसको।